Hello, can all of you hear me? Awesome. Yes, sir. Okay. So we'll be having an online session. We'll discuss questions based on things that we have discussed so far over the last 2 weeks, majorly on the various properties and the features of the various functions that we have discussed, right? Or even on and functions and so on and so forth. Hmm. Okay, so we'll first start off our discussion with some various topics from here and there based on things that we have discussed. Like, for example, let's say, first of all, odd and even extensions of a function, or in even extensions of a function. So this would be like suppose we are given that fx is a function which is defined as x mod x for x greater than 0. Okay. And now we are asked to find out how should fx be defined how should fx be defined for x less than 0 such that fx is an odd function, fx is an even function. ठीक है ना? So in order to find out the odd and even extensions of a function, what we do is step 1, find the nature of the given function. Okay. Like for example, we take it up over here, fx is equal to x mod x, but since it is for x greater than 0, so x greater than equal to 0 may mod x will be the same as x. So this becomes x square, right? So the graph of this function is like this. It's a upward opening parabola. Now, if you want to create an even odd extension of this, so odd extension. Hi everyone, sorry for the interruption. My net disconnected. Hmm. So as I was saying, so if we are looking for an odd and even extension of the function, then we look at the nature of the given function. So fx is x mod x for x greater than equal to 0, which will end up becoming x square, the graph of which is an upward opening parabola like this. Right. Now we look at the features like for an odd function, the graph has to be symmetric about origin. Has to be symmetric about origin. And for an even function, the graph has to be symmetric about the y-axis. Okay. Now the original graph of x square would be something like this on the left-hand side, which will make it an even function. But for an odd function, we want the graph to be something like this. Image about the y is the image about origin.
So what we do is, if the function is odd, if the original function is odd, then the odd extension will be the same as fx. But the even extension will be minus of fx. Similarly, if a function is even, then its odd extension will be minus fx. Whereas its even extension will be fx. So the even extension of an even function will be the same as the function, but the odd extension of a even function will become negative. Okay. So that's to say that if we had to define an odd function for this, odd function fx will be defined as x mod x for x greater than or equal to 0 and minus of x square for x less than 0. Okay. And the even extension, the even function of fx would be x mod x for x greater than 0, जो कि given है, and x square for x less than 0. This would be the even extension. Because x square, the original function is even. So even extension will be the same as the function. So x square ही रह जाएगा. And odd extension will become minus of fx. So minus of x square हो जाएगा. You know, this is what we get. Okay. But then another scenario, let's say we take another example of this. Question. Let's say fx is defined as sine of mod x plus x e power minus x. X e power x. X into e power x for x greater than or equal to 0. And we have to do the same. Find the odd and even extensions. Find the odd and even extension of fx. Uh, is anyone able to follow this? Yes, sir. Okay, let's try this out then. So if you look at the first component of the function, sine mod x, what is the nature of sine mod x? Sine mod x would be an even function, f of gx है जहाँ पे g is even, तो f पे फर्क नहीं पड़ता, f of gx will be even. And what can we say about x e power x? None. X e power x will be a non function, out of which x is a
odd function and e power x is a non-function. So overall the function will become a non-function. Now that's interesting. How do we make an odd and even extension of a non-function? So first part of it, let's suppose if we talk about the odd extension. So fx is equal to sin mod x plus x e power x for x greater than or equal to 0. Since it's a sin mod x is an even function and iska odd extension chahiye, so what will happen to the odd extension of an even function? नेगेटिव हो जाएगा उसका. X greater Minus than 0 पे fx. this will behave as sin x. mod positive है तो it will behave as sin x. तो यहाँ पे आ जाएगा minus sin x. Okay, अब e power x. What is the graph of e power x? E power x का graph is like this. या in general कोई भी graph होगा fx का. अब how do we make this graph symmetric about the x axis? Origin, sorry. पहले तो ये करना होगा ना odd के लिए origin. How do we make the graph symmetric about origin? Yeah, in fact, if we consider x e power x पूरे में, so if we suppose have a function, suppose gx is x e power x, तो at x equal to 0 इसका वैल्यू क्या होगा? 0. And x e power x, since it's an exponential, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा जाएगा. Now, how do we bring this graph on the negative side? सर क्यूब साइड वगैरह कुछ लेंगे क्या? Okay. रिफ्लेक्ट अबाउट द ओरिजिन. If x is if you plug in x as minus x, तो ये आएगा minus x into e to the power minus x. ठीक है ना? For x being less than 0. तो ये माइनस होगा यहाँ पे if we put a minus sign over here. ठीक. अब ऑड फंक्शन के लिए माइनस बाहर आना चाहिए. तो x तो ऑड है, वो तो माइनस बाहर दे ही देगा, पर e पावर माइनस x से x नहीं, x का नेगेटिव नहीं बाहर आएगा नहीं अब्सॉर्ब होगा. सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस e पावर x, the negative. So what we do is, let's say we define g of minus x as x e power minus x. For the odd extension, ये वाला फंक्शन लो. तो what would be g of minus x in, अच्छा g तो उसके लिए यूज कर लिया था, उसको चेंज कर दो. Let's say we take a function hx as this. So what would be h of minus x? It will be minus of e power x. ठीक है? Yeah, I think I'm not able to. अच्छा चलो ठीक है, वैल्यू वाइज करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा. That will make more sense. ऐसे x x के टर्म्स में करने से अच्छा वैल्यू में करते हैं. अच्छा g of 1 क्या होगा? g of 1 would be e. तो g of minus 1 considering an odd function minus e आना चाहिए. odd function के लिए वैल्यू minus e आना चाहिए. Similarly, g of 2 would be like 2e square. तो odd function के लिए g of minus 2 of e power minus 2e square आना चाहिए. This will be easier to understand. ये समझ में आ गया ना? odd function के लिए ये होना चाहिए. Yes, sir. Okay. अब देखो, how should we design a function hx, ठीक है, so that इसका h of minus 1 is minus e and h of minus 2 is minus 2e square. तो can we say that x को e पर minus x करना चाहिए? तो अगर hx would be x e पर minus x, तो what would be h of minus 1? Minus e. And what would be h of minus 2? Minus 2e square. देखो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. So in that case, if gx is x e power x, what would be the odd extension of it? The odd extension would be x e power minus x.
वैल्यू वाइज दिख रहा है ये? सो फॉर द ऑड एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स ई पर माइनस एक्स, सॉरी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, x e to the power minus x for the negative for the odd extension. एंड सेकेंड में इवन एक्सटेंशन करेंगे, सो एफ एक्स इज साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स ई पावर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और इसका अब इवन एक्सटेंशन करना है, तो साइन मॉड एक्स इज ऑलरेडी इवन, एक इवन फंक्शन का इवन एक्सटेंशन विल बी द सेम एज द फंक्शन, तो यहाँ पे तो साइन एक्स ही आ जाएगा. ठीक है, साइन ऑफ मॉड एक्स ही आ जाएगा, सेम फंक्शन आ जाएगा. और अब ना इफ जी एक्स इज एक्स ई पावर एक्स, फिर से करो, तो ऑड के लिए तो ये होना चाहिए. अच्छा, इवन के लिए जी ऑफ माइनस वन क्या आना चाहिए? सेम एज ई. जी ऑफ टू आना चाहिए सेम एज 2e². तो अब हाउ शुड बी डिजाइन अ फंक्शन एच एक्स फॉर दिस सच दैट एच ऑफ माइनस वन इज ई एंड एच ऑफ माइनस टू रिमेन्स 2e². Anyone? How should we design hx for the even wala case? h of minus 1 ei or h of minus 2 2e² i. Minus of x e power minus x. देखो चेक करो, Yes, sir. does everyone follow this? तो यहाँ पे इवन एक्सटेंशन के लिए आ जाएगा x e power minus x for x less than 0. So this is how we do the odd and even extensions of functions. सर एक बार आप फिर से इसको समराइज कर सकते हैं? हाँ. Okay. So odd even extensions is generally a concept which is followed like this, in which fx का एक definition दिया हुआ रहेगा either for the positive side or for the negative side, and you'll be asked to find out the definition of the function. What should the definition behave is on the other side, so that it is an odd function overall or it is an even function overall. Okay. So that is finding the other half is what we call as odd or even extensions of a function. ओके सर. Right. So इसके लिए as we discussed rules क्या होता है कि first what we do is we find the nature of fx, कि भाई जो function given है उसका nature क्या है. ठीक है. So if the given function is already an odd function, तो उसका odd extension will be the same as the function. कुछ नहीं करना है, जो definition चल रहा है वही लेफ्ट वही दूसरे साइड पे भी चिपका दो. ओके पर सर. अगर इवन एक्सटेंशन करना है देन द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ एफ एक्स, जैसे अपने यहाँ पे किए हैं. ठीक है, यस सर. एफ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इवन है, तो ऑड एक्सटेंशन में Yes, sir. माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे. इवन एक्सटेंशन में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इवन है, तो विल कंटिन्यू ऑन एज एक्स स्क्वायर. ओके सर. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वुड बी ट्रू फॉर एन इवन फंक्शन एज वेल. इफ अ फंक्शन इज ऑलरेडी इवन, तो उसके ऑड एक्सटेंशन में माइनस एफ एक्स जाएगा, इवन एक्सटेंशन में फंक्शन सेम रह जाएगा. ओके सर. Then the next example that we have taken is for the case of an non function. How do we deal with this for a non function? क्योंकि e power x is a non function. यस सर. ठीक है, तो non function के लिए क्या करते हैं? We take gx as the non function and Okay. solve it value wise. ठीक है सर. तो g of 1 का वैल्यू e है, g of 2 का वैल्यू 2e² है.
So for an odd function, we need a function जिसका g of -1 is -e and g of -2 is -2e square. Yes, sir. क्योंकि odd के लिए वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए. So then we search. अब इसको we design कि भाई इसके एक सिमिलर सा एक फंक्शन जो ये वैल्यूज दे will be something like this x e power -x. Okay, sir. Okay. एंड इवन के लिए क्या होगा? इवन के लिए g of -1 e आना चाहिए, g of 2 e square आना चाहिए, सेम एज दिस. Yes, sir. तो वी लुक एट कि भाई इसके लिए कैसे फंक्शन को डिजाइन करें. सो वी डू इट इन दिस वे कि भाई x तो नेगेटिव है पर आउटपुट Yes, sir. पॉजिटिव होना चाहिए. सो दोनों जगह x को नेगेटिव कर दिया. सो -x -e power -x. So that when we plug in a negative value of x, we get a positive value base में भी और पावर में भी. Okay, sir. और इसको फिर यहाँ पे लिख देंगे इवन एक्सटेंशन में. Okay, sir. ठीक है ना? Thank you, sir. Okay. So this is how we do for odd even extensions. सर हाँ नमन बोल. हाँ सर, अगर तीन जगह पर हो, मतलब फंक्शन अगर तीन जगह पे डिफाइंड हो तो फिर जैसे 1 से लेके 5 तक, 0 से लेके 1 तक और लेस देन 0 तक हाँ तो तीन जैसे फंक्शंस पीस है. वाइज डिफाइंड होगा वैसे ही जो एफ ऑफ तेरा जो एक्सटेंशन है वो भी पीस वाइज डिफाइंड होगा. ठीक है. जैसे लेट्स से तू ऐसा बोल रहा है ना कि सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर गोइंग फ्रॉम 0 to 1 एंड मान ले साइन एक्स कर दिया फ्रॉम 1 to 3 और एक कुछ कर दो मॉड एक्स कर दो फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3. हाँ और इसका ऑड एक्सटेंशन करना है या इवन एक्सटेंशन करना है तो हाँ एग्जैक्टली हाँ सेम वे में रिफ्लेक्ट करेंगे. तो 0 to 1 का जो इंटरवल है उसका इवन एक्सटेंशन का पार्ट क्या होगा? -1 to 0. 1 to 3 का जो पार्ट है उसका इवन एक्सटेंशन आएगा -3 to 1 में. e to -1 और 1 x -e ग्रेटर to 1. देन 3 वाला जो पार्ट है वो -3 लेस देन x में आ जाएगा. यस सर. ऑल यू हैव टू डू इज रिफ्लेक्ट एवरीथिंग अबाउट द y एक्सिस इंटरवल्स के लिए. Sure. अब मान लो इफ यू आर डिजाइनिंग एन इवन एक्सटेंशन तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर? Even. ऑलरेडी इवन है तो इवन का इवन एक्सटेंशन विल बी द सेम एज द फंक्शन. व्हाट इज साइन एक्स? Odd. ऑड है तो ऑड का इवन एक्सटेंशन Negative. -fx. मॉड एक्स इवन है, इवन का Even. इवन एक्सटेंशन Even. सेम रहेगा. ठीक है ना? तो ये इसका Yes, इवन sir. एक्सटेंशन हो गया. अब वही ऑड एक्सटेंशन होगा तो -x स्क्वायर साइन एक्स और माइनस मॉड एक्स हो जाएगा. ठीक है सर, थैंक यू. यो. Okay, next question. If fx is defined as sin x by box of x by pi plus half. Okay, box of x by pi plus half. Then find the nature of fx. Fx is odd, even, none. Find the nature whether fx is odd, even, or none. So we start with a f of -x. So sin तो odd है तो माइनस sin x हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x by pi plus half. अच्छा, now when we were discussing odd EVA box functions, so we had done a property that box of x plus box of minus x is -1. And I had said that whenever we encounter a box of -x in the function, we always replace it. The first thing that we do is we replace it as
a minus of 1 minus of box x. ठीक है ना? When we are discussing about the functions. So we have a box of minus of x by pi. So what will we replace it with? तो हो गया minus sin x divided by minus 1 minus of x by pi plus half. But 1 minus half हो गया minus of sin x divided by minus of x by pi. x by pi and a minus half. तो यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा एंड ये माइनस माइनस कट गया. सो वी एंड अप गेटिंग sin x by box of x by pi plus half, which means what is the nature of the function? Even. It's an even function. Okay, next question. If a function fx defined as sin x plus cos of root over of 4 minus a square x is periodic with period 4 pi, find a. Find the value of a. सर रूट 3 हुआ क्या? नहीं, देखो sin x का पीरियड क्या होगा 2 पाई एंड cos ऑफ दिस का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई रूट ओवर ऑफ 4 माइनस ए स्क्वेयर. ठीक है, अब अगर पीरियड 4 पाई है तो इसका मतलब है 2 पाई एंड 2 पाई का एलसीएम 4 पाई आना चाहिए. But when will the LCM of this 2 pi and this be 4 pi? LCM तो 4 pi तब होगा ना when 2 by root over of 4 minus a square is 4. ये वाला पार्ट 4 होगा तब जाके we'll have a 2 pi, we'll have a 4 pi and 2 pi and 4 pi का LCM will be 4 pi. So this entity must be equal to 4. यहाँ से find the value of a. So what do we get? Root over of 4 minus a square is half. और 4 माइनस ए स्क्वायर इज 1/4. तो ए स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 1/4. तो 16 माइनस 1. ए इज प्लस माइनस रूट 15/2.
समझ में आ गया? हम्म, Okay. Next question. If a function fx is defined as x cube plus tan x plus mod of x square plus 1 by p for x lying between -2 to 2 is an odd function, find p. Find the range of values of p. Find the range of values of p. So this would be x cube is an odd function, tan x is an odd function, but we know that box is a non-function. Okay. So in order for the function to remain odd, we need to get rid of this. Okay. ये box वाला part को eliminate करना होगा. How do we eliminate box वाला part? We look at x. What is x? -2 to 2. So how much? What be the range of x square? 0 to 4 0 to 4. plus 1 हो जाएगा 1 to 5. 5. 1 to 5. So if we can ensure that p is something greater than 5, so what will happen to x square plus 1 by p? X square plus 1 by p in that case would be a value lying between 0 to so x square plus 1 will be a value lying by p will be a value lying between 0 to 1, and box of 0 to 1 will become 0. Will become 0, which will effectively eliminate this. Okay. So fx will reduce to x cube plus tan x, which is an odd function now. So therefore p must be greater than 5. Okay, next question. सर एक बार ऊपर करिए ना. हेलो क्या? एक बार ऊपर करिए ना. हाँ हाँ, ये था क्वेश्चन. If x cube plus हाँ. tan x plus this is an odd function for x lying between -2 to 2, find the range of values of p. तो जो पार्ट ऑड नहीं है उसको एलिमिनेट करना होगा. थैंक यू सर. Next So question. can you explain the last portion of this question? The last portion of this question was, so like we have to get rid of the box part. So in order to get rid of the box part, we find the range of x square plus 1. Okay, what are the values that x square plus 1 can take? So x square will lie between 0 to 4.
plus 1 will be a value lying between 1 to 5, right? So if we ensure that p is greater than 5, so x square plus 1 by p will be a value lying between 0 to 1. And in that case, box of the value will become 0, effectively eliminating the term. Yeah. Yes, sir. Okay. Next question. If f of x plus a is equal to 1 plus root over of 2fx minus f square x for all values of x belonging to real numbers, find the period of fx. Find the period of fx. So this is a functional equation based question because we are given a functional equation and इस functional equation से period निकालना है. So since we have a functional equation defined for all values, we look something like this. अच्छा, पहले तो let's say we simplify this a bit. F of x plus a is 1 plus root over. Suppose we do a 1 minus 1 plus 2fx minus of x square x कर लिया अंदर में. So that this ends up becoming 1 plus root over of 1 minus of f of x minus 1 whole square. देखो ये ठीक है. So f of x plus a would be this. Now what we do is we replace x with x plus a. क्योंकि f of x plus a is the only relation that we know. So ये आ जाएगा f of x plus 2a is 1 plus root over of 1 minus bracket में f of x plus a minus 1 whole square. But if we back substitute f of x plus a from the original question, मतलब the previous statement, जैसे if this is 1, तो 1 को अगर back substitute करेंगे, तो we get f of x plus 2a is 1 plus root over of 1 minus. अच्छा, f of x plus a का वैल्यू क्या है? 1 plus root over of 1 minus f of x minus 1 whole square. है ना -1. तो ये तो f of x plus a हुआ है ना -1 का स्क्वायर. ठीक है, f of x plus a is this much, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट. तो व्हेन वी रिमूव द ब्रैकेट, ये 1 कैंसिल हो गया. सो इन दैट केस ये वाला जो स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर बन जाएगा. ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 minus 1 minus of f of x minus 1. सॉरी, f of x plus a होगा ना ये. My bad. 1 minus f of x plus a आएगा ना. x plus a है ना -1. हाँ, सर x plus a क्यों आएगा, मतलब x plus a को तो x में टर्म को रिप्लेस किया. mistake in this. एक मिनट. I'll have to rewrite the expression because I think I've made a mistake in this. तो 1 minus 1 था, फिर यहाँ पे f of x plus a डालेंगे.
तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए के लिए वैल्यू है 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एंड देन वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जगह पूरा आ गया। फिर विल ये तो ये क्लोज होगा, फिर -1 होगा एंड फिर एक स्क्वायर आएगा। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू प्लग इन किए थे ना, ये वाला पूरा पार्ट तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू है, राइट। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर तो ये वाला 1 कैंसिल होके आ जाएगा, 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से ये प्लस हो गया। आई होप एवरीवन इज एबल टू फॉलो द साइंस। So this will end up becoming 1 plus root over of fx minus 1 whole square। फिर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो विल गेट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये -1 ये +1 कैंसिल होके we finally end up getting f of x plus 2a is equal to fx, which then implies that the function is periodic with period 2a। हाँ अब ठीक है, इस बार कैलकुलेशन सही है। इनफैक्ट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लेना चाहिए था, तो ज्यादा इजी हो जाता। यहाँ से वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स, हाँ फिर इतना नहीं कंफ्यूजन होता, वुड हैव डन इट बेटर। एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 उधर चला गया, रूट उधर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट डायरेक्टली रिप्लेस हो जाता। ये वाला पूरा पार्ट डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस हो जाता, 1 1 कैंसिल हो जाता। हाँ शी वुड हैव सेव्ड अ कपल ऑफ कंफ्यूजिंग स्टेप्स ये वाला डायरेक्टली कर लेने से। Anyways, was everyone able to understand the calculation in the question? Yes, sir. Yeah. Okay, then. Okay, एक बार लिख लो। I hope everyone has written the question down. Doing this would have saved us a couple of steps. अच्छा, next question. If f of x plus f of x plus 4
is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6. Find the period of fx. So again, it's a question on replacement. So let's suppose replace x with x plus 2. Because the values that we have are x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. The consecutive difference is 2. So replace x by x plus 2. So f of x plus 2 plus f of x plus 6 is equal to f of x plus 4 shit. plus f of x plus 8. अब दोनों को ऐड कर दो. So x plus 2 will cancel off with x plus 2, 6 will cancel off with 6, 4 will cancel off with 4. So directly आ गया f of x is equal to f of x plus 8. So the function is periodic with period 8. तो -2 से भी तो हो सकता है ना रिप्लेस करके. हाँ -2 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. कंजुगेटिव डिफरेंस जो भी डिफरेंस हो उससे रिप्लेस करना है. दैट इज द आइडियल स्टेप. वी डू इट विद द डिफरेंस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा इनहैंस्ड है. If f of x plus 1 plus f of x minus 1 is root 3 fx. Find the period of f. Viभाज्य replace. So to solve this, what we do is first iteration. We replace x with x plus 1. तो ये देगा f of x plus 2 plus fx is equal to root 3 times f of x plus 1. So let's say this is equation. ये तो equation 1 है ये. Let's say this is equation 2. Then second iteration, same equation में in 1 replace x with x minus 1. तो ये देगा fx plus f of x minus 2 is equal to root 3 times f of x minus 1. ये हो गया 3. Now the whole reason of doing it like this is because we have a coefficient of root 3. तो terms cancel नहीं होगा. Even if we create the similar terms. जैसे यहाँ पे f of x plus 7 है, यहाँ पे भी f of x plus 1 है, but कोफिशिएंट अलग है तो कैंसिल नहीं होगा. यहाँ पे fx है, यहाँ पे fx है. But because the coefficients are different, cancel नहीं होगा. So what we do is, in order to get rid of root 3, we use this method. एक बार x plus 1 का इटरेशन किया, एक बार x minus 1 का इटरेशन किया. Now add 2 and 3. Add 2 and 3. So we'll have f of x plus 2 plus twice of fx is equal to plus एक और आएगा ना टर्म, plus f of x minus 2 is root 3 times f of x plus 1 plus f of x minus 1. But from the original equation, what is f of x plus 1 plus f of x minus 1? Root 3 fx. So ये हो जाएगा root 3 into root 3 fx, which is 3 fx. और यहाँ पे 2 इधर आ गया. So we end up getting f of x plus 2 plus f of x minus 2 is equal to fx. The root 3 is eliminated.
एंड अब इस वाले में दिस बिकम्स आर मेन रिलेशन. This becomes our main relation. So what should we do in this relation? F of x plus 2, x minus 2, x. What is the consecutive difference? तो टू डिफरेंस होगा कंसेक्यूटिव लेके. Consecutive difference 2 है, तो we'll replace x with x plus 2. क्या आ गया? F of x plus 4 is equal to, sorry, plus f of x is equal to f of x plus 2. अब दोनों साइड को ऐड कर दो. तो ऐड करने पे x plus 2 कैंसिल हो गया, f x कैंसिल हो गया. We get f of x plus 4 plus f of x minus 2 is equal to 0. And then इसमें replace x with x plus 6. क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन आ गया, f of something plus f of another thing is equal to 0. तो f of x plus 10 plus f of x plus 4 is equal to 0. And now we subtract. So we'll end up getting f of x plus 10 is equal to f of x minus 2. So in that case, what would be the period of the function? The period of the function is 12. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ऑन द सेम प्रिंसिपल और फंक्शनल इक्वेशन फाइंड यूजिंग पीरियड निकालने के लिए. Okay. Next question. If a functional equation is such that f of two x square minus 1 is equal to fx, find the value of f of f of 50 fv0. अच्छा, मतलब ये तुम लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा नोटेशन. लेट्स से ऐसे लिख देते हैं. वैल्यू ऑफ the fifth derivative of fx at x equal to 0. Find the value of the fifth derivative of fx at x equal to 0.
How do we solve this is in the question, let's say, replace x with minus x. So we'll have f of 2x square minus 1 is equal to f of minus x. पर इससे क्या आ जाएगा? Can we say that this implies f of x is equal to f of minus x? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में सेम ही है. Which means fx is an even function. Clear है? Now we go back to the property of the derivatives that we have done. What's the derivative of an even function? Odd function. Even है. So first derivative odd, second derivative even, third derivative odd, fourth derivative even, and fifth derivative would be odd. Now, if the fifth derivative is odd, what would be the value of the function at 0? वन माइनस टू एक्स कर हो जाएगा. अरे नहीं, 0 होगा ना. सॉरी सर. Remember, we had done the property. For an odd function, f of 0 must always be 0. So we have both go. So the question was, since it's an odd function, since the fifth derivative would be an odd function, and for any odd function, f of 0 must be 0. Okay, so that will be the answer. Okay. Next question. If f of x is equal to ax plus b by cx plus d, find the condition for
f of fx to be equal to x. Find the condition for f of fx to be equal to x. So f of fx will be like a times x की जगह पे आ गया ax plus b by cx plus d plus b divided by c times ax plus b by cx plus d plus d. And we need f of fx to be equal to x. ये आ जाएगा. So which is like saying a square x plus ab plus bcx plus bd by cx plus d is equal to x times ये हो गया acx plus bc plus dcx plus d square divided by cx plus d. तो cx plus d तो कैंसिल हो गया. यहाँ से if we create the similar terms together, तो a square x plus ab plus bcx plus bd is equal to acx square plus bcx plus dcx square plus d square x. तो अब कितना x square do we have? So cx square taken common, a plus d, और x कितना है? यहाँ पे bcx है, यहाँ पे d square x है, यहाँ पे bcx है. तीन टर्म्स है x का. ये दो x स्क्वायर का टर्म्स ले लिया, तीन x का टर्म्स है, तो दैट विल बी लाइक अ प्लस bc प्लस d स्क्वायर. अच्छा bcx तो कैंसिल हो गया. ओके bcx तो कैंसिल हो गया. बहुत ही बढ़िया बात है. So the only term that we have over here is d square x. अच्छा यहाँ पे a square x भी तो था. So we have a plus d plus a into d minus a x. तो ये टर्म भी हो गया
ये टर्म भी हो गया। और फिर कांस्टेंट में यहाँ पे दो ही टर्म है, ए बी प्लस बी डी। So that's like minus of b taken common, a plus d is equal to 0. So a plus d कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0. देखो, इज वाज एवन एबल टू फॉलो द कैलकुलेशन? Yes, sir. So now we have a product of two factors equal to 0. So either of them must be 0. But will the quadratic be 0 for all values of x? No. क्वाड्रेटिक तो सारा वैल्यूज के लिए 0 हो नहीं सकता, बिकॉज द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है वी नीड एफ ऑफ एफ एक्स टू बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स अदर देन डी बाई सी ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो डोमेन में नहीं रहेगा। तो व्हेन विल दिस होल थिंग बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स? When a minus d. व्हेन a इज इक्वल टू माइनस डी। ये कंडीशन एक याद भी रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, मेंस में भी और एडवांस्ड में भी, related to f of x is equal to ax plus b, ax plus b by cx plus d, and f of fx is equal to x. So it is a question that has come quite a few times. तो ये कंडीशन याद रखना है। सर अगर ऑल वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करता तब ये भी एक वैलिड सोल्यूशन होता? नहीं नहीं, वो तो ऑल वैल्यूज के लिए तो होगा ही ना यार, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स करना है अपने को, तो ऑल वैल्यूज के लिए ही करना होगा ना। ठीक है। है ना। तो जैसे एक बार ये एक बार पूछा था क्वेश्चन, वाज लाइक दिस ऑन दिस क्वेश्चन, ये था दैट इफ एफ ऑफ एफ एक्स, सॉरी, इस टॉपिक पे या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2010x प्लस 163 बाई 165x माइनस 2010x। ये 2000 का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली समझ ही में आ रहा है। फॉर x ग्रेटर देन 0 देन फाइंड दी find the minimum value of f of fx plus f of 4 by x. So this was a question that was asked in 2010. If fx is 2000x plus 163 by 165x minus 2010 for x greater than 0, then find the minimum value of the expression f of fx plus f of 4 by x. So how do we solve this? So we notice the fact that X less than के लिए a is equal to minus d वाला कंडीशन वैलिड है, ठीक है ना। a is 2010, d is minus 2010, तो a is equal to minus d, which means for this function f of fx will be the same as x, तो this will become x और ये बन जाएगा 4 by x. Now how do we find the minimum value of x plus 4 by x? am greater than equal to gm कर दिया,
So x plus 4 by x by 2 is greater than or equal to 2. So this will always be greater than or equal to 4. So the minimum value is 4. Yeah, so we had a question asked on this once. So, okay, in any case, let's stop at this for today. Okay, we'll have another online class on Friday. Okay, Friday 10, we'll have another online class to discuss few more questions of this particular chapter. Okay, all the very best for the test tomorrow. Thank Okay, Thank you, sir. Good night, bye sir. Bye, everyone. sir.